855 million people. Economic losses estimated more than 15 times higher as compared to 1950s. And losses globally are 520 billion per year, pushing 26 million people in poverty. It has affected 855 million annually, and 97% deaths are in Asia. That's why Asia is called epicenter of disasters, or the capital of disasters. चलो कोई नहीं, अगर दे दो आप लैपटॉप। वो कहते हैं उम्र दराज से मांग के लाए थे 4 दिन, 2 इंतजार में कट गए 2 आरज़ू। हो गया, चलो कोई बात। Now economic losses are close to 2% of GDP, which is more than the annual defense budget. Now आप देखिए करीब 25-26 लाख करोड़ रुपया डिफेंस को आता है, तो economic losses are to the tune of this much due to disasters. Next. Now global population, अब हम लोग कई बार कहते हैं कि we are a very very productive economy, we are a reproductive economy also. हर साल हम 2 करोड़ लोग पैदा करते हैं, and we add 1 Australia because Australia की population is 2.46 crores. तो जिस देश में एक नए देश का इजाफा हो, ऐड हो जाए, तो कितना भी डेवलपमेंट आप देखें, कितना भी आप ग्रोथ रजिस्टर करें, it will not be seen. So that is one thing which we have to be careful. And by next 10 years, Earth is going to be warmer by 4 degrees, which is कल प्रोफेसर अंशु रानी जी ने बताया था कि 1 डिग्री का भी अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होता है, so that's a very phenomenal rate of warming. अर्बनाइजेशन आपने देखा होगा, जब हम छोटे थे तो निबंध लिखते थे, हम कहते थे कि साहब भारत एक कृषि प्रधान देश है, 80% आबादी उसकी गांव में रहती है, क्योंकि जब हम आज़ाद हुए तो करीब 36 करोड़ आबादी थी और 16% अर्बनाइजेशन था, 16% लोग ही शहरों में रहते थे, और आज करीब 40% लोग अर्बन जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं उनमें रह रहे हैं. If you see, 17 out of 20 fastest growing cities in the world are in India, and the cities are, as you can see them on the slide. Now, as per David Harvey's report, the capital appropriation of the land is a great concern in India. आपने देखा होगा इंडिया में जो अर्बनाइजेशन है वो अदरक की तरह है. आपने देखा होगा ना कि कोई शहर कहीं कोई पटेल नगर रख दीजिए, कहीं गांधी नगर रख दीजिए, उसका नाम नेहरू नगर, इस इलेक्शन में नहीं तो अगले में तो रेगुलराइज हो ही जाएगा. So that is the kind of planning and growth which we are talking about. And India has 14 most populous cities out of 20 in the world. Next. Now if you see, I was reading a report which says that Phnom Penh in Cambodia and Tanzania, Dar es Salaam will be leaders in growth. आपने देखा होगा इंडिया ने भी अफ्रीका की तरफ, जिसे डार्क कॉन्टिनेंट किसी जमाने में कहा जाता था, इंडिया इज नाउ प्रोग्रेसिंग एंड एवरीबडी इज फोकसिंग ऑन अफ्रीका. आप देखिए अभी आईआईटी चेन्नई का एक कैंपस खुला है ज़ंज़ीबार में, प्रीति अग्लियान इज द डायरेक्टर, द लेडी इज हेडिंग इट. सो इंडिया इज आल्सो शोइंग इट्स प्रेजेंस. इफ यू सी द हॉर्न ऑफ अफ्रीका, वहाँ हर एक जो विकासशील देश है उसकी वहाँ प्रेजेंस है. वाटर इज गोइंग टू बी ए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फैक्टर. एंड आपने देखा होगा यहाँ, खासकर आगरा में मैंने देखा है, अभी आप देखिए बेंगलोर में आपने वो रिपोर्ट्स आया हुई थी, पढ़ी होगी, स्कूलों में बंद हो गए, रेस्टोरेंट्स में पानी नहीं दिया जा रहा है. दैट इज द कंडीशन ऑफ बेंगलोर. नाउ आगरा इज ऑल्सो हेडिंग फॉर दिस काइंड ऑफ क्राइसिस. मेरे पड़ोस में एक सज्जन रहते हैं. एक बार मतलब मैंने उनसे पूछा था, एक बार मेरे का कार खड़ी थी उनकी, रोज धोते हैं उसको, घर पूरा रोज धुलता है. तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कितना दूध देती है? कहता साहब ये तो कार है. तो मैंने कहा आप नहला तो ऐसे भैंस की तरह रहे. मैंने कहा यू डोंट नो दैट काइंड ऑफ वाटर व्हिच यू आर यूजिंग, यू आर डैमेजिंग योर कार. बट यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है. उसने कहा ठीक है साहब, आज है, कल की कोई चिंता नहीं. So that is the kind of, and these are the 14 cities which will be water critical in this summer, which is already started since yesterday. Now, as per WHO standards, एक आदमी को 135 लीटर पानी चाहिए होता है. इंडिया का एवरेज 20 पे आ गया है. लड़ाई में जब हम लोग जाते हैं तो हमें केवल 5 लीटर पानी मिलता है,
जिसमें कोई नहाने का प्रावधान नहीं है, नो एब्ल्यूशन, नथिंग, केवल पानी पीने के लिए, नो शेविंग, नथिंग. So that day is not very far when India will have this hard scale of water, जिसे फौज में कहते हैं. तभी कहते हैं ना कि वतन की फिक्र करना था, वतन की बर्बादी आने वाली है. And I am not trying to scare you with these figures. मैं केवल क्योंकि you are the academic leaders, you are the future of India, जैसे मुस्तकबिल है. तो इंडोनेशिया का अगर आप स्टेचर देखें तो भारत के मुकाबले कुछ नहीं है, लेकिन उसने उसको पोल्यूशन फ्री कर दिया है. हमारे यहाँ केवल इन चीजों का जिक्र और फिक्र होता है. We are not bothered about this at all. उनकी कैपिटल जकार्ता 2050 तक डूब जाएगी. उन्होंने they have already shifted their capital to Borneo. Now if you see, because of this air pollution, we are losing, or every Indian is losing at an average of 1.5 years. Next, to come and have a good breakfast and a lunch followed by a heavy dinner, it is that you take some points. I'll give you an example of, you see, I had a commanding officer. तो हमारे यहाँ जल्दी 12:30 बजे के बाद सीईओ के पास कोई फाइल जाती नहीं है, बिकॉज 1:30 बजे छुट्टी हो जाती है हमारी. उसके बाद क्योंकि अगर वो 1:30 बजे तक बैठेगा तो बाकी स्टाफ 3 बजे जाएगा. तो उसके बक्से में एक वो डाल देते हैं सूटकेस में डाक, और वो अपने घर पे देखता है शाम. तो जब उसका ड्राइवर आता था तो 2 सूटकेस लाता था. तो आई आस्क्ड हिम वन डे, मैंने कहा यार ये एक तो हम बेचते हैं, दूसरा क्या है? कहता दूसरा सूटकेस आपका है. तो मैंने कहा इसमें क्या है? तो हंसने लगा. कहता था इसमें रिंच और नल की टोटी है. तो मैंने कहा नल की टोटी क्या करते हैं? कहते साहब जहाँ भी देखते हैं कि पानी बह रहा होता है, he stops me, he tells me कि यार उसमें एक प्लास्टिक का वो लगा क्या था. And this he used to do totally out of his own money. Now imagine the concern of that person. तो ये जरूरी नहीं है कि साहब डिजास्टर मैनेजमेंट या नेशन बिल्डिंग केवल किसी पदाधिकारी का ही काम है या किसी का है. Everybody can contribute to that, and we must. Now this is such a humble this thing, because water conservation was his concern always at every time. Now if you see 90% of the world children, 1.8 billion, breathe toxic air. I mean, if this is the gift which we are going to give it to our children, I mean, we are so concerned about them, but we are not concerned about the nature. And over 9 lakh children died from acute lower respiratory ailments due to foul air. तो किसी ने पूछा था ना, एक बार दिल्ली से मैं गया था, I had gone to Vietnam for a conference. तो वहाँ इंडियन एम्बेसी पूछा कि दिल्ली का क्या हाल है. तो मैंने उसे कहा था, मैंने कहा हर चेहरे पे दर्द और मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है. फेफड़े जले हुए. Next. Now, if you see the oxygen source from ocean, we have been talking about grow trees, this ocean where we get 75% of the oxygen. I mean, we are spoiling them to the hilt. Now, anoxic water, I mean, if you see the figures, I mean, they have quadrupled. Next. Now, these are the disaster, impact from 1980 to 99. If you see reported disasters in these 20 years, block of 20 years, you will find they have doubled. The total deaths have not increased much because of technology and awareness. The human loss of life has reduced, but the loss of property has phenomenally gone up. Now, economic losses have almost doubled, 3 trillion. The losses world over are 3 trillion, which is as good as Indian economy. Next. Now, why do Indians live dangerously? अब आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ हर चीज में हम इतना रोमांच भर देते हैं. We invite disasters. जैसे हम शादियों की लिस्ट नहीं बनाते, पप्पू के मौसा जी नहीं आए, ठीक है, गुड्डू के चाचा जी नहीं आए, ऐसे हम रिस्क को बुलाते हैं. आपने देखा वो एक सिग्नेचर ब्रिज बनाया था दिल्ली में, लोग फोटो खिंचवाते हैं, वहां जाके उसके नट बोल्ट खोल के ले गए एक आदमी. देयर वाज अ मैसिव एक्सीडेंट दैट टाइम. सो जहां भी हो, आई मीन वी डिराइव सच अ ग्रेट प्लेजर इन डीफेसिंग. एंड अब आप देखिए यहाँ मतलब किसी भी आप ट्रेन में चले जाएं, कहीं चले जाएं, आई मीन लाइफ इज पैथेटिक बिकॉज वी डोंट टीच पीपल, वी डोंट टिक ऑफ.
ये फौज में कहावत है, रोको और टोको. If you see something which is happening wrong, please take him out. Do convey it. It is your duty. People have done it. अगर आज हम किसी सुधरी हालत में हैं, तो क्या आया था तो बिल्कुल सन्नाटा था. राम से ब्रदर्स एक बढ़िया फिल्म बना सकते थे यहाँ. कहने का मतलब ये है कि we must be punctual. Please respect time. If you don't respect time, time will disrespect you at the time when you require it. So that is very, very important. Inculcate the, have friendship with, timelines. अरे साहब कल कर लेंगे. यहाँ देखो आप किसी से पूछो कहाँ, अरे अभी तो बस पहुँच गए चौराहे पे ठाड़े, अभी तो घर से चला ही नहीं है. तो इस तरह की जहाँ आपके टाइमलाइंस वगैरह हैं, if you don't have friendship with timelines, you will not be able to achieve it. So that is very, very important. आपने देखा होगा जितने अभी आप प्रोफेसर संतोष वगैरह बैठे, और भी कई, मतलब आप लोग हर अपने फन के माहिर हैं, अपने जो भी कला या जिस विभाग से आप ताल्लुक रखते हैं, तो जब तक आप अपने को कष्ट में थोड़ा नहीं दोगे, तब तक आप कुछ अचीव नहीं कर सकते. So you have to stretch up, you have to reach in time. It is a very sad commentary. और मुझे मालूम है, मुझे इतने दिनों से कई बार मेरी वाइफ बोलती भी हम सबसे पहले पहुंच जाते हैं. मेरे कहा हम फिर भी सबसे पहले ही जाएंगे. So have those kind of things. I mean, you achieve nothing by coming late. Now, the most common one, of course, is the belief of कर्म. सबसे बड़ा डिजास्टर, अरे साहब हमारे भाग्य में तो ऐसे ही मरने लिखा है. This belief has to be shed off. You are your destiny designer. आप अपना मुस्तकबिल लिख रहे हैं. And last is, of course, who sets the pace? It is the society. If today you are coming late, if you are not able to deliver, if you are not doing justice to your academics, what kind of leaders do you expect? And your contribution is the maximum in nation building. The challenge of chalk and challenge, उनका भी चोली दामन का साथ है. आज अगर इस यूनिवर्सिटी ने इतने लोग पैदा किए हैं, तो उसमें जो एकेडमिक लीडर्स है, मैं इसलिए टीचर्स को एकेडमिक लीडर्स ही बोलता हूँ. आई नेवर कॉल देम एज टीचर्स बिकॉज दे हैव शेप्ड दिस कंट्री. नेक्स्ट. नीचे फुल पे क्लिक करके कर दो. वो दब गया होगा वो. बाहर क्लिक कर. ओके नेक्स्ट. ये तो हो गया. नेक्स्ट ये कवर कर दिया होगा. नाउ हाई रिस्क अर्थक्वेक सिटीज क्या क्या हैं आपके? श्रीनगर, शिमला. These are the cities which you have to, because they are all in zone 2 and 5. Next. Now, terrain peculiarities. अब इंडिया एक ऐसा कंट्री है, because मैंने तकरीबन I can say that I have seen almost entire India and I served there. It's a very beautiful country with all kind of terrains. आप देखिए ग्लेशियर, करीब 44% पूरी दुनिया के ग्लेशियर्स एशिया में. We have mountains, we have valleys, we have jungles, plains. 320 छोटी मोटी और बड़ी नदियां हैं इंडिया. We have plains. 55% of India still stays on Indo-Gangetic plains. अब आप देखिए 2-3 साल में उत्तर प्रदेश एक ऐसी मुकाम पे पहुंच जाएगा कि चाइना के बाद सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि अमेरिका तीसरे नंबर पे है जिसकी 33 करोड़ है. तो कुछ ही दिनों की बात है, तो we'll be at number 3. Ghats, coastal areas and island. We have a 7,516 kilometer coastal line. So these are the challenges which India is facing. And of course the population pressure. Next. Now this is the disaster risk. This must have been covered. I will not dwell on it. Next. Now this also must have been covered yesterday because I was seeing the program. Next. Next. Next.
Now National Disaster Management Authority, ये भी कल हो गया होगा. I will straight away come down to the next. Yeah. Now I will just touch upon the National Disaster Response Force. तो NDA में क्योंकि उसके चेयरमैन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, and he really takes, because when I was in service, I briefed him a couple of times, and he is really very, very responsive, and he pays a lot of attention on disaster-like issues. Now these are the NDRF battalions which are there. 16 of them are there, and all of them are CBRN trained. Now you have say about 1149 person, and आपने टीवी में देखा होगा कि साहब 6 टीम भेज दी गई, 4 टीम भेज दी गई. That means every team has got 45 members. And इतने बढ़िया, they are one of the best forces in India. Because I worked with them for almost 3.5 to 4 years. Next. Now they are specialized in response during disasters, assist in community training and preparedness. They have proactive deployment. जहाँ भी उनको अंदेशा होता है कि साहब इस तरह की कोई हो सकती है, especially floods and all, because earthquake वगैरह में तो reaction time बहुत कम होता है. So they are deployed, and then they are also there to assist you. If they are not deployed, they can carry out mock drills and all for you. Next. Now these are the location of these battalions. They have been started from paramilitary forces like BSF, CISF, and all these things. Next. और ये इनके पास इक्विपमेंट रहता है. मेरा इसको दिखाने का मकसद यही है कि खासकर आप देखिए अभी जो ये महीना चल रहा है, ये फाइनेंसेस के हिसाब से बड़ा, क्योंकि आप वो जैसे इलेक्शन 2 चरणों में होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ही फाइनेंशियल ईयर भी 2 चरणों में होती है. दिसंबर तक आप चिल्लाते रहते हैं फंड्स के लिए, और फरवरी के बाद सरकार कह देती है नो सरेंडर विल बी एक्सेप्टेड, चाहे साइकिलों में पेट्रोल भरवा लो लेकिन वापस मत करना. सो जब भी अगर आपको इस तरह का कोई मौका मिलता है, प्लीज गो एंड बाय दीज इक्विपमेंट. दिस विल हेल्प यू इन योर वर्किंग ड्यूरिंग पीस टाइम. खुदा न करे अगर कोई इस तरह की आपको is coming to help you. Next. Now major participants क्या है? अब आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ कोर्स हैज गॉट ए लार्जर फुटप्रिंट. उसके बाद आप देखिए आर्म्ड फोर्सेस एंड अदर स्टेक होल्डर. लेकिन सबसे पहले जो रिस्पॉन्डर है वो जो वहाँ के लोग हैं, लोकल बाशिंदे हैं, वो. अभी आप देखिए भगवान न करे कोई रेलवे एक्सीडेंट होता है तो आप देखिए सबसे पहले जो आपको रिलीफ मिलता है वो वहीं से मिलता है जो लोकल गांव के लोग होते हैं. कोई चारपाई लेके आ रहा है, कोई फावड़ा लेके आ रहा है, कोई कुदाल लेके आ रहा है, कोई गैती लेके आ रहा है. Then comes the next. Now this is the national structure for disaster management. You have National Disaster Management Authority जो दिल्ली में है, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उसके चेयरमैन है. उसके बाद यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जिसके नीचे डिपार्टमेंट, क्योंकि 2002 से पहले डिजास्टर एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के नीचे आता था, क्योंकि डिजास्टर्स जो थे वो एग्रोसेंट्रिक थे, कन्वेंशनल फ्लड्स, क्रॉप फेलियर, सूखा पड़ गया. अब काफी उसका जो प्रारूप है वो चेंज हो चुका है. सो नाउ दे आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ओके, नेक्स्ट. नाउ द रोल ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो मेरा टॉपिक है. Now, Army works on this credo, on this principle. The safety, honor and the welfare of your country comes first, always and every time. ये Indian Military Academy में बिल्कुल दीवार पे it is etched on the wall, and it is etched on the minds of every Indian Army officer. The honor, welfare and the comfort of the men you command comes next. जो आपके subordinate है, दूसरी तरजीह उनको दी जाएगी. As an officer, as a leader, your own ease, comfort and safety comes last, always and every time. और यही आप देखिए अपनी फैमिलीज में हम फॉलो करते हैं. अगर आप देखें अपने पिता माता पिता को अगर देखा होगा तो कई बार आपने देखा होगा वो खुद सेक्रीफाइस करते हुए आपकी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, आपको वो फैसिलिटीज़ मुहैया कराते हैं. आपने देखा होगा कई बार जूते नहीं है, फादर के पास शर्ट फटी हुई है, वो कहेंगे यार अब तो गर्मी का टाइम आ गया, टी शर्ट से काम चला लेंगे. It is not that he doesn't have that requirement of that garment or that shoe. It is basically that he is sacrificing for you. So जहाँ भी आप, wherever you are heading an organization, you should be careful for that. Now, principles of employment क्या है?
बार और देख लो भैया, अगली बार से जन्म पत्री मिलवा के आया करेंगे। ओके, प्रिंसिपल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो डिफेंस को लगाते हैं, यू शुड यूज देम जुडिशियसली। अब यहाँ क्या होता है कि आई एम नॉट अगेंस्ट एनी गवर्नेंस और एनीथिंग। मेरा, जैसे मैंने कहा था कि एम इज दैट वी मस्ट लर्न, इट इज नॉट दैट वी आर इनफॉलिबल और इनकॉरिजिबल और नथिंग ऑफ दैट नेचर, बट जुडिशियस यूज होना चाहिए। आपने देखा होगा कि जनरली क्या होता है, हमारा जो आपदा प्रबंधन है सेना में, वो सेकेंडरी रोल होता है। पहला है टू फाइट विद द एनिमी, और हर एक ऑफिसर का एक सेकेंडरी रोल होता है कि अगर कहीं सिविल एड टू सिविल अथॉरिटीज, जब सिविल अथॉरिटीज को जरूरत पड़ेगी सहायता की, तो उसको वो कैसे मदद कर सकता है। तो सबसे पहले आदमी अपना ऑपरेशनल एरिया देख के फिर वो देखता है कि यार कहीं बाढ़ आ सकती है, कहीं कोई दंगा हो सकता है, तो क्या क्या एरिया मेरे नीचे आता है। लेकिन जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो कभी आपके पास नहीं आता। लेकिन जिस दिन पूंछ में आग लगती है उस दिन सबसे पहले, मुझे याद है एक बार मैं किसी दंगे में गया था, तो जनरल